shelter from them. His spiritual आपको यही निर्णय करना है ना, master said, there is nothing much to worry about this. अपना पद, अपना राज्य, अपना स्थान दो, तो महाराज एक काम करना होगा. So he told him that you should do one thing. राज्य के नदी के तट पर 3 कमरे बनाओ, रूम. He told him to make 3 rooms on the banks of the river in their kingdom and give them 100 rupees each. ये इंडिया के राजा की कथा है. और तीनों को ये कह दो and tell कि ये all of them that you take these 100 rupees आपको ये अपने अपने कमरे भरने हैं. and with these 100 rupees अपनी रूम को you have to fill the room. और आप तीनों में से जो अधिक अपने कमरे को भरे, And the person who fills it more will be the king. राजा का स्थान, And you will give that position to him. माथा थोड़ा धुना हो तो मुझे पता चले. समझ में आ गया? हाँ, अब माता जी जब ना धुनो जेन्युइन तो समझ में आ गया. जैसे गुरु जी ने कहा वैसे ही राजा ने. So the king followed the instruction of his spiritual master. He prepared the rooms and gave him 100 rupees each and told them that you need to fill them up at most, and the more the room you have filled, the more, so then you will be the king. पहला बच्चा जो था ना, लगभग हमारी तरह, आप लोगों की तरह, मेरी तरह, समझो ना. So the first son was similar to us. He used his wisdom or brain. He thought that my father has gone crazy. In 100 rupees, how can you fill in the room in 100 rupees? To decorate the room, you need so much money. ये रूम तो नहीं भरेगा, लेकिन ये रूम जो है, यहाँ थोड़ा रूम है पेट में, ये भर जाएगा. So, but I can fill my stomach with 100 rupees. Anyways, this 100 rupees will not be able to fill the room. So at least let me fill my stomach. 25 रुपये का मारे तो बधाने खुश રાખવાના ને. આ પંજાબ વાળાને खुश રાખવા માટે કેવું પડે, 25 रुपये का लिया छोले चना, छोले भटूरे, सॉरी. और साउथ इंडिया वाले को भी खुश करते हैं 25 रुपये की इडली सांबार. So he spent all the money in getting all types of food, and he thought that at least let me fill my stomach. So the second son was a little more intelligent. He thought that the position of a king is such a great position to be in. So he thought that what should I do? And how should I fill the room? So he thought that we have he went to a store and got the old stuff from there. So he took all whatever he could buy in 100 rupees and filled the room. And the king came with his spiritual master to see what his sons are doing. So they saw that the one of the son has eaten and was sleeping. So he said that this is not going to work. So the second said, second had filled the entire room
with all the second-hand material. वो आप लोग But जैसा था what the third one has done, था तीसरा गया दुकान में he went to a 5 रुपए shop, का दिया 5 रुपए की बाती और 10 रुपए he का गाय का शुद्ध घी bought केवल 30 रुपए का a खरीदा lamp, cotton and desi 5 ghee, रुपए का दिया नु कोडियो आवे ने and in 30 और rupees 5 रुपए की बाती और 10 with रुपए का गाय 5 का घी लाकर rupees उसने lamp, डाला और 5 उस rupees कमरे में रख दिया cotton, उस दिया को जलाया और उस and दिए का प्रकाश 20 पूरे rupees कमरे में ghee, and in उस 30 दिए rupees he के filled प्रकाश the से room, पूरा कमरा भर गया and the entire room was filled with राजा जब light. इसके कमरे में आए The king, when गुरु came जी के साथ to तो his 70 room with रुपया his वापस दिया benefited spiritual कि भैया master, he 100 की भी जरूरत नहीं replied केवल 30 में ही काम बन गया that 70 if आप रखिए even 30 rupees was sufficient, बताइए and I don't even need this 70 rupees, पहले and he वाला returned the जाग money के back. जब सो गया दूसरे ने भरा लेकिन क्या भरा भंगार भरा और So तीसरे ने क्या किया उस कमरे में दीप जलाया प्रकाश जलाया और उस प्रकाश से the पूरा कमरा अब कोई last ये कह one, सकता है he कि filled the इस room कोने में with प्रकाश light. उस कोने में प्रकाश नहीं प्रकाश से पूरा कमरा भर चुका है और उसी समय उस राजा ने उस तीसरे बेटे को अपना पद प्रदान कर दिया And at this स्थान प्रदान कर दिया moment, और the सारे king लोग decided that this is the son who will become the king, कथा तो बहुत छोटी and सी he है gave him his मैंने position. पहले ही कहा बड़ा मार्मिक प्रसंग है भक्तों As I told, this ये pastime is राजा और small, कोई नहीं but ये the राजा philosophy is deep. परमात्मा है So, ये this राजा king is no other परमात्मा than है Lord Himself, और ये तीन बच्चे और कोई नहीं and ये 3 तीन बच्चे sons हमारे are जैसे मनुष्य no है other than human beings हम like जैसे us. लोग आखिर तो संसार के लोग परमात्मा के ही अंश परमात्मा के ही So, पुत्र we हैं all are part and parcel of the सो Lord Himself, परमात्मा ने भगवान ने हम and सबको कान दिए हैं He has given और us कान के साथ all साथ the हमको faculties 100 like साल की ear, उम्र प्रदान की है and He has given ये us रूम जो है 100 वो years of हमारे कान life. है So that और room वो is 100 our रुपये और ears, कुछ नहीं 100 and रुपये those हमारी 100 100 साल rupees की is उम्र है our 100 years of life. उस परमात्मा के भगवान के प्रथम मनुष्य ने एक प्रकार के लोगों ने क्या So, किया one type संसार of के the लोग living धरती पर क्या entity करते or हैं human beings, परमात्मा ने what do बड़ा they do? सुंदर कान दिया They have given जीवन के such लिए a बहुत सुंदर beautiful उम्र दी ears, लेकिन जीवन खा पी कर मौज but करने में बिता they दिया just waste their life in मूर्ख क्या करे eating and making सोने merry में अपनी सारी उम्र and गुजार देते sleeping. हैं। They finish their life दूसरे with just पुत्र ने eating, क्या किया sleeping, etc. अपना कमरा तो भरा So the लेकिन second किसे भरा one भोजन filled से दूसरे the पुत्र room ने with लोग all the things मनुष्य that are not required. अपने कानों को भरते तो हैं So the second category of लेकिन people भगवत are कथा से who fill their दुनिया के ears कूड़े not कचरे with भंगार से Bhagavatam अपने Katha, कानों को भरते हैं but they fill with यहाँ the क्या हुआ वहाँ क्या हुआ वहाँ झगड़ा वहाँ क्लेश वहाँ material प्रॉब्लम बस दुनिया problems, के इसी distress, इसी and झगड़े news को of all kind. So अपने कानों को भरते हैं they और just fill their ears with the ऐसे ही poison करवाते हैं of this material world and waste their लेकिन lives. तीसरे पुत्र ने क्या किया But the third one, ज्योत जलाई what did he प्रकाश do? जलाया He ये प्रकाश और enlightened कुछ the नहीं room. हमारे That शास्त्रों में light is प्रकाश को nothing else ज्ञान कहा गया than the knowledge. ज्ञान की उपमा प्रकाश के In साथ दी our गई Vedic injunctions or अर्थात Vedic तीसरे scriptures, पुत्र ने the ज्ञान light प्राप्त is किया बहुत छोटी सी उम्र में बहुत denoted कम समय में as भरपूर the ज्ञान light. ग्रहण कर लिया और ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन को पूर्ण बना लिया And he completed his चाहे life कितना भी संसार by के filling दुख his भोगते room हम or पूर्ण नहीं life हो सकते with चाहे light कानों से of संसार knowledge. की कितनी भी बातें कितनी भी चर्चा सुन ले So no matter how हम much पूर्ण नहीं हो सकते discussions of this material world we listen, we won't be able to बहुत कम समय के complete लिए ourselves. But ध्यान even करते for रहते less हैं time, if we ज्ञान अर्जन try करते हैं to तो gather ज्ञान के or द्वारा accumulate knowledge, मनुष्य जीवन then
through that knowledge, we can gradually make our life more sustainable and complete. और फिर अंततः क्या होता है, जैसे उस राजा ने अपने उस तीसरे बेटे को अपना पद दे दिया, And lastly, what happened? मनुष्य जीवन Like प्राप्त करके जो ज्ञान ग्रहण the करते हैं, king gave his position उसे भगवान अपना पद to प्रदान कर देते his हैं। son. भगवान Similarly, the प्रदान Lord करते हैं। also gives भगवान अपने his धाम position गोलोक and में his eternal abode to that living entity. इसलिए मनुष्य जीवन की Therefore, सार्थकता the या मनुष्य human जीवन की life बुद्धिमानी इसी में है कि अपना जीवन is किसी अन्य best कार्य used में व्यस्त न करते हुए, instead of wasting our lives into material things. हम ज्ञान ग्रहण करें। We should try और to परंतु ज्ञान भी बहुत gather प्रकार के होते knowledge, हैं, and there are so many types of योग्य ज्ञान, knowledge, but भक्तिमय ज्ञान, the knowledge का of Shrimad Bhagavatam, का जो or ज्ञान है, the ज्ञान नहीं, knowledge related to the Supreme Personality of Lord, is not only और जो knowledge but भागवत also सुनते pure हैं, devotional भागवत service towards पढ़ते the हैं, Lord. इसे केवल ज्ञान नहीं कहा जाएगा। भागवत में So the ज्ञान तो है, reading the Bhagavatam or listening to Bhagavatam वैराग्य के is साथ not just considered as knowledge, but तो it जब also भागवत has सुनते हैं तो ज्ञान, detachment, भक्ति और that is वैराग्य vairagya, तीनों चीज एक and साथ प्राप्त bhakti, होती that है। is unalloyed devotion towards the Lord, इसी से हमारा मानव and जीवन knowledge, धन्य that is होता है। gyan. And that will make our श्रीमद् life भागवत के दशम स्कंद better. के 21वें अध्याय में So, भगवान श्री कृष्ण in ने the 10th canto, 21st नाद छेड़ा है। chapter of ज्यादा Shrimad विस्तार से हम Bhagavatam, नहीं कह पाएंगे, the Lord लेकिन has संक्षिप्त में played his भगवान श्री flute. कृष्ण की So, बांसुरी, we won't be able to discuss in कृष्ण की detail, मधुरता तो आप जानते हैं, but कृष्ण की मधुरता में we'll 4 discuss माधुरी प्रसिद्ध some. है। And एक है Krishna's नाम माधुरी, एक is है लीला famous माधुरी, for एक है धाम his माधुरी और एक है name, वेणु माधुरी। pastimes, प्रस्तुत शेष यह 3 दिनों में and हम कृष्ण की वेणु माधुरी के ऊपर flute. कुछ श्रवण करेंगे। लेकिन मैं श्री गणेश करूं सुखदेव गोस्वामी के वचनों से। श्री सुखदेव So if गोस्वामी I start with इस Sri प्रसंग से Shukdev प्रारंभ करके Goswami, कह दिया, when he श्रील started this प्रभुपाद pastime, he said, Shri Shuk Uvacha, or Shri Shukdev said, शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुवातं स गोपाल को अच्युत। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्थम इस प्रकार शरत स्वच्छ जलम, so शरत Shukdev Goswami says that और शरद ऋतु का निर्मल that जल, जिस जल में the Sharad पद्माकर सुगंधिना Ritu बहुत सुंदर or the कमल उगे हैं winter season is और approaching, सुंदर कमलों से बहुत सुंदर and सुगंध प्राप्त हो रही है। the pond are filled with lotus अभिभूत करने लायक दृश्य सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। and beautiful fragrance is coming out of these flowers. गोविंद टीवी ने As you can see the background here, आप देखो शरद ऋतु का जल भी बह रहा है। so the water is flowing. खोज रहा हूँ कहीं कमल मिल जाए। I'm just looking for the lotus. शरद स्वच्छ जलम, इस प्रकार शरद ऋतु हो चुकी है और शरद ऋतु का स्वच्छ So he says that और उस जल in में बहुत the सुंदर पद्माकर Sharad Ritu, the water is quite pure and there are lotus flowers and there is so much fragrance coming out of these flowers, सरोवर वाले उस and the स्थान pond पर filled with lotus flowers, भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाल सखाओं के साथ गायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। and in this beautiful place
Lord Sri Krishna is coming, accompanying gopis, cows, etc. And the air is flowing incessantly, slowly, so that Krishna and his gopas will not feel sweat. And a fragrant air is flowing because the air is touching the lotus flowers and taking their fragrance away. So the infallible Lord is coming to this forest. तो कहते हैं कसुमित वनराजी सुष्मि भृंगु द्विकुलह, बहुत सुंदर पुष्पित वृक्ष पंक्तियों में So, the forest is filled with trees, filled with flowers, and the honeybees are intoxicated with the honey. And as you see, the birds, these birds are flying in groups. और वन के सरोवर नदियां पर्वत बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं. And the ponds are decorated. मधुपति अवगाह्य चारयन सह पशुपाल बल चक्रुन वेणुम. बलराम के साथ And he is accompanying Balram and his associates or gopas. बांसुरी बजाने की इच्छा हो रही है. And at this point, he feels like playing his flute. And after entering the forest, what did Shyam Sundar do? He, if you see in the background, Prabhupada ji had picturized the verses of Shrimad Bhagavatam as you see in the background. गोप ग्वाल सखा बैठ गए और बिल्कुल सामने एक दूसरे Krishna found a stone and sat on it. On another stone, Balram ji sat. And he kept his right leg on his left leg and he tilted his neck a little and then he pressed the holes of the flute and with his transcendental divine lips he blew the air in the flute. And the tune that he wanted, he was arranging his fingers in that manner. And a transcendental vibration started flowing from the flute. And Shukdev Goswami describes that sound beautifully here in this verse. Striya ashrutya Venu Gitam Smarodayam Kachit Paroksham Krishnasya Kachit Paroksham Krishnasya स्वसखिभ्योऽन्यवर्णयन्. कृष्ण ने जब उस मुरली में फूंक मारी और बांसुरी blew the air in the flute and the sound vibration that came was heard by the women of the Vraja, the gopis of
the मैं Vraja. उसको बता रहा हूँ। Or अब आपने क्या सुना? कृष्ण के बाजू में बलराम बैठे हैं, उसके बाजू में गोप सखा so बैठे you हैं, have heard that और वहाँ गौ माता Krishna is surrounded with लेकिन cows, कृष्ण ने जब Balramji and बांसुरी बजाई, Gopas. But when बांसुरी का he प्रथम played नाद the flute, किसने सुना? the first sound तभी vibration was heard उस by बांसुरी whom? की आवाज The ब्रजवासियों ने सुनी। women of Vraja, ब्रज में the उस gopis ब्रज of की Vraja. स्त्रियों को आश्रित्य सुनाई दी। और वेणु गीतम, उस वेणु की आवाज को सुनकर, उस And ध्वनि by को सुनकर, just listening to उस this transcendental ब्रजवासियों में, sound, उस गोपियों के हृदय में स्मर उदयम, the स्मर माने प्रेम gopis भाव, उदयम, were उदय माने overwhelmed with कृष्ण की बांसुरी emotion के of love. नाद में Samar Udaya इतना means रस है। ये रस की विशेषता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कृष्ण की loving बांसुरी में इतना emotion रस है, जिस बांसुरी के नाद को was सुनकर manifested. गोपियों के हृदय में जो प्रेम भाव सोया हुआ था, वो जाग So गया। his उसके flute हृदय is में दिया so उठ transcendental उठ and is गया। so powerful क्या that स्मर? the काम भाव, प्रेम भाव, that भक्ति love भाव। that they have for Lord Shri Krishna, which was मुझे आपसे भी dormant, यही कहना was है rekindled कि by this कृष्ण की बांसुरी vibration. के नाद को सुनकर गोपियों का प्रेम भाव जग गया, वैसे ये बांसुरी की कथा सुनकर हम भक्तों का भी प्रेम भाव जग जाएगा। So by listening to this pastime, even our mellow तो towards क्या the हुआ? सुखदेव जी Lord दूसरी लाइन में will कहते हैं, manifest. काचित परोक्ष कृष्णस्य, कुछ गोपियां So in the second line, Shukdev ji कृष्णस्य says, स्वसखिभ्य अन्ववर्णनम, गोपियां कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। so the gopis started describing the कृष्ण की qualities of बांसुरी का Lord Shri नाद Krishna. सुनकर प्रेम भाव प्रकट हुआ, और गोपियां एकांत में बैठकर कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। They were all क्या वर्णन sitting करने लगी? सुखदेव alone जी कहते and हैं, they started describing the तद qualities of Lord Shri वर्णयितुम, Krishna. वर्णन क्या कर रही है? And तद what are they वर्णयितुम, describing? तद, उन गोपियों ने कृष्ण का वर्णन करना आरंभ किया। स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, वो कृष्ण का वर्णन जैसे ही आरंभ करने गई, So मतलब as कृष्ण के बारे में चर्चा करने they गई, were about to discuss न about the सकाशान Lord Shri स्मर वेगेन, Krishna, न सकाशान स्मर वेगेन, स्मर वेग, उस प्रेम भाव का इतना वेग था, बांसुरी की so आवाज को सुनकर गोपियों के their हृदय में emotion of love was so overwhelming वेग हुआ, by hearing प्रेम का, भाव का, the sound कि of गोपियों को Krishna's flute वर्णन करना था बांसुरी का, सॉरी, that बांसुरी की महिमा का वर्णन करना था, they had to speak about the glories of लेकिन गोपियां Krishna's कृष्ण का flute, वर्णन करने लगी। but they started describing or बांसुरी का glorifying गाना था, the Lord गीत गाना Himself. था, गोपियों को बांसुरी की चर्चा करनी थी। सखी बताओ ये बांसुरी कैसी है, ये बांसुरी का आवाज कैसा है, वर्णन करना चाहती थी बांसुरी का, They लेकिन wanted अपने मन to को sing the glories of the flute, but they couldn't control their वर्णन करने लगी emotion भगवान and कृष्ण का। started glorifying the Lord. क्या था? And बहुत what was सुंदर निवेदन करते हैं। that description? The verse in front of your screen. बद्धापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रङ्घ्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत में गोपियों के मुख से निकला हुआ ये प्रथम श्लोक है। In the song of the flute of the Lord, लेकिन चर्चा हो रही है भगवान कृष्ण की। the discussion is supposed to be of the flute, but the discussion is being conducted on Lord Shri Krishna. हम वेणु के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन मन कृष्ण के प्रति इतना दौड़ रहा है कि वेणु की चर्चा They have decided that they will speak on about the flute, but they're so much overwhelmed they start glorifying the Lord. भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण, बरह, बरह माने मोर पंख और आपिडम माने आभूषण। They say that our Shyam Sundar has made the peacock feather his ornament. Why? Because he has no desire. He is a calm. And his body, that is Vapu, is Natvar, that is perfect, like an artist. क्या कहते हैं, सुपर हीरो, क्या कहते हैं आजकल बच्चे लोग, खैर नटवर, नट माने हीरो, नटवर, हीरो में भी जो सुपर हीरो होता है। So he is the best. His body is as perfect as that of a perfect artist. श्रेष्ठ नट के समान जिनका शरीर है, और कर्णयो कर्णिकारम, अपने कानों में कनेर का पुष्प लगाया है। And he has put the kaner flower on his ear. So usually the carpenters in India put their pencil as in their ear. So at previous times, they used to use the ether, that is fragrance, and it used to be distributed, and they used to keep that cotton behind their ear. जिसने अपने कर्ण में, so Lord Krishna has put kaner flower on his ear. And what kind of clothes is he wearing? When Srila Prabhupada ji was asked, how is Krishna? Then Prabhupada used to quote this verse. So if anybody asks you how this क्योंकि इस श्लोक में भगवान your के Lord looks, then we can share this verse with them, because this verse describes the Lord. And the glory of this verse is that the son of Srila Vedvyas ji was a detached monk, and he had left everything, even his parents, and was situated in the Brahman position. But when he heard this verse, where the Lord is described by the gopis, and who can speak more than gopis or Srimati Radharani about Lord? और सुखदेव जी ने जब
when Shukdev ji heard this verse, he found no pleasure in Brahman's or impersonal position. तो इसमें कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास। विभ्रत माने चमचम चमचम चमकते हुए पीतांबर। वास Vibrit means shining yellow clothes, कनक कपिशम। which were shining. कनक कपिशम, कनक माने सोना। Kanak Kapisham. Kanak means gold, तो पीले रंग का or Kapish is clothes, yellow clothes. माने सुशोभित हो रहा है। So he is decorated with yellow colored clothes. Vipradas means decorated, and Kanak means yellow, and Kapish means the clothes. And not only that, he is wearing the Vaijanti mala in his neck. So Yashoda Mai used to make Krishna wear the gold ornaments as he was the son of a king. But his friends will remove the ornaments and decorate him with Vajanti mala. Vajanti mala is the mala which, or garland which has 5 types of flowers. और फिर आगे कहते हैं, अच्छा ये एक्चुअल वर्णन करना था वेणु का, लेकिन मन में कृष्ण इतने छाए हुए हैं कि पहले कृष्ण का वर्णन हुआ, अब वेणु का वर्णन। अब कहते हैं कि इस They have described the Krishna first, and as they were overwhelmed with emotion, and now they are describing the flute which was supposed to be discussed earlier. छिद्रों को अधर सुधा, अपने अधर ओष्ठ के अमृत से पूरयन, उस So वेणु के छिद्र को पूर रहे हैं। माने भगवान he fills the holes of his lotus, of his flute, with his lips nectar. अधर सुधा अमृत से उस वेणु के छिद्र में अमृत भर रहे हैं। गोप वृंदे, So he is filling the nectar of his lips in the holes of the flute, and he is sitting among his friends, the Gopas. And where is he situated? He is in Vrindavan, which is even better than Vaikuntha. जो वैकुंठ से भी उत्तम है ऐसा वृंदावन। इसलिए आप श्लोक में देखोगे ना तो विभक्ति समान लगी हुई है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम। कथम भूतम वृंदारण्यम, वृंदारण्य कैसा है तो कहते हैं स्वपद। So he says that how is Vrindavan? Vrindavan Swapad means whose feet are Vaikunt himself. He is entering this Vrindavan singing a song. So this transcendental form of the Lord, which the gopis see on a daily basis, is described by them here. सुंदर नट वेश बनाते हुए कभी ये मुद्रा कभी ये मुद्रा। ये तो कलाकार का बाप है। नटवर माने क्या हुआ? कलाकार का बाप। सारी कला जानता है। So he कान में फूल डाला है, विपरीतवास कनक कपिशम, knows all the art forms and is decorated with yellow clothes, and he has ornaments of garland and peacock feather, and he is entering the Vraj while playing the flute. So our Lord has never taken the trident or club in his hands,
or he never even took a bow and arrow, but he took flute in his hands. Why? He never carries a weapon in his hand because the thing that we carry represent our nature or behavior. That is why he never kept any weapons in his hand, but he kept flute in his hand. Because he want to present his form of love and ecstasy in his form, and that is what he want to present to us. So, so others carry weapons, but Krishna carries the flute. तो जिस भाई ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए और ब्रिटिशर्सों ने देखा, उन अंग्रेजों ने देखा कि भारत वाले कंफ्यूज हैं, भगवान कौन, कोई देवी को पूजता, कोई देवता को पूजता, कोई बापू बाबा को पूजता। तो उन अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, तुम्हारी कंफ्यूज हम दूर किए देते हैं। बोले तुम सब अपने अपने भगवान के फोटो लेकर आओ, हम फोटो देखकर बता देंगे इसमें से सुप्रीम कौन है। सारे फोटो दर्ज कराए और वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे और बैठकर उस पर रिसर्च करने लगे। बोले इस देवी के हाथ में त्रिशूल है, इस देवी के हाथ में त्रिशूल है, इसका अर्थ क्या है? या तो इनको किसी का डर है, कोई मार न दे, कोई वार न कर दे। हाथ में त्रिशूल क्यों है? या तो इसको किसी का डर है, या तो फिर ये किसी की रक्षा में खड़ी है। मतलब किसी के वहां जॉब, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना भारत में, किसी की सिक्योरिटी में, मतलब सार ये है कि ये सुप्रीम नहीं है, या तो इसको किसी का डर है या तो किसी की नौकरी कर रहा है। तो त्रिशूल वाले जितने भी थे सब माइनस हुए इवन शिव जी भी वहां से माइनस हो गए। किसी के हाथ में तलवार थी, बोले ये भी आयुध वाला है। कोई ध्यान कर रहे थे, बोले ये ध्यान करते मतलब इसके ऊपर भी कोई है। ये खोजते 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 कृष्ण का फोटो आया जो मेरे पीछे है, पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते गाते हैं। अंग्रेजों ने कहा हाँ ये लड़का भगवान हो सकता है। बोले क्यों? बोले इसको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो इसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, और ये गाना गा रहा है, ये बांसुरी बजा रहा है, मतलब बंदा मौज में है। बाकी जितने भी हैं सब कुछ ना कुछ टेंशन में है, कुछ काम में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई आयुध लेकर बैठा है, लेकिन इस लड़के को कोई चिंता नहीं है। सुप्रीम यदि कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं। कृष्ण की बांसुरी का वर्णन आगे हम करें, लेकिन थोड़ी सी कुछ तात्विक सात्विक बात करूं, बांसुरी का परिचय दूं। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मूल कारण दुष्टों का विनाश करना तो नहीं, या कृष्ण के अवतार का मूल कारण धरती के भार को दूर करना नहीं, या फिर कृष्ण के अवतार का मूल कारण धर्म की स्थापना करना भी नहीं है। ये सब गौण कारण है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मूल कारण इस समस्त जगत को और इस जगत में रहने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तु को बिल्कुल आनंद में सराबोर कर देना, इस जगत की जड़ और चैतन्य वस्तु को आनंद मग्न कर देना, आनंद में आप्लावित कर देना, यही कृष्ण के अवतार का मूल उद्देश्य है। असुरों को मारने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना नहीं, धरती का भार दूर करना नहीं।
कृष्ण आए हैं तो संसार के समस्त जीवित को तो सही, लेकिन जो निर्जीव है, जो जड़ है, उनको भी आनंद में सराबोर कर देना, ये कृष्ण का उद्देश्य है। और हम देखेंगे बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, और कृष्ण ने ये कार्य किया बांसुरी के माध्यम से। बांसुरी ऐसी बजी कि मनुष्य तो मनुष्य, चैतन्य तो चैनित, जो जड़ वस्तु थी वो भी पिघल गई, जड़ को भी आनंद हो गया। कुछ जड़ जैसे मनुष्य होते हैं जड़ આપણે हमारे गुजरात में आ जड़ जेवो છે आओ। तो कृष्ण की बांसुरी जो है ना, चेतन को तो आनंद देती है, जड़ को भी आनंद देती है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का उद्देश्य, और इसलिए तो देखो ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं, गाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। पुराने जमाने से चला आया हुआ ये कीर्तन, ये गीत, जब भी ठाकुर जी का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, तो क्या गाया जाता है? हम क्या गाते हैं? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी, नंद घेरा नंद भयो। सो नंद के घेर आनंद भयो। तो नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ है। सीधा सिद्धांत, सीधी फिलोसॉफी है कि कृष्ण का प्राकट्य लोगों को आनंद देने के लिए हुआ। So Krishna manifested to give pleasure to everyone, not only to the humans, birds, animals, etc., but even the trees and vegetation, etc. So there are three things that are associated with the Lord. First, the Lord is absolute truth. He is Shivam and Sundaram. He is beautiful. Although it is provided to by Lord Shiva, but it was given to Lord Ram or Krishna. In Ramcharitmanas, he put his signature in Kashi Vishwanath. He said that this Krishna, he is absolute truth, and he is Shiva, and he is the most beautiful. भक्तों, भगवान केवल सत्य हो, सत्य बहुत, भगवान सत्य है। No doubt the Lord is the absolute truth, and actually he is the absolute truth. Whatever we are doing day and night is useless or futile. फिर वो कनाडा में थोड़ा सा डाइवर्ट किया कैमरा, So one day Parvati ji zoomed into US and in Canada and in India, throughout the world, and then she said in Gujarati that everyone is burning. So she said that, oh my dear husband, people say that we want material gains, this and that, but please tell me what is the absolute truth. अनुभव में अपना उमा कहूँ, अनुभव में अपना सत हरि भजना, जगत
सब सपना। हे उमा पार्वती, He मैं मेरे says, "Oh Uma, let me share my experience that the truth and absolute truth is only Hari, and his pastimes or glories are true, but rest everything else in this material world is untrue, and it is like a dream." वास्तविक सत्य हरि, तो सत्यम भगवान सत्य है, शिवम भगवान शिव है, So the Lord शिव is माने मंगल, absolute truth, and he is Shiva. Shiva means auspiciousness, and who is capable of भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। so who is the person in this world who can give or who is all auspicious? That is the Lord himself. भगवान को केवल सत्य और शिव मानो ना, तो भगवान की पहचान अधूरी रह जाती है। If we just consider the Lord as absolute truth or auspiciousness, that is Shiva, then it is an incomplete form. If we think that he is the absolute truth and he is the one who does all welfare of us, but still that Lord should be beautiful as well. भगवान की सुंदरता जो है ना, And the beauty of the Lord कि कृष्ण सुंदर है, is absolute. की सुंदरता को हम कैसे निहारेंगे? So if we are asked that Krishna is beautiful, then लेकिन कृष्ण की सुंदरता केवल are we going to feel that nectar of the Lord's form? So his beauty is can be felt by eyes. That would be the common answer, but that's not completely true, because his beauty can be even felt with ears and can be felt with our nose as well. So Krishna can be, and his beauty can be felt by touch, by eyes, by listening through his ears, through our ears, and through our nose, and by listening to his flute. We can enjoy the beauty of the Lord. और इस सुंदरता का आनंद जो है ना, कृष्ण ने अन्य अवतारों में उतना नहीं दिया, And Krishna has never दिया। एक बात याद रखें, revealed this beautiful form in any other incarnation as much as he did in this incarnation. In rest incarnations, he manifested and gave mercy, money, opulence, etc. to others, but क्योंकि कृष्ण अवतार में what Krishna has given is unparalleled. He not only gave his mercy, but along with that, he gave them ecstasy and pleasure. भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से किया, and he did that through the medium of his flute. बहुत सारी बातें हैं। वेणु का जो प्रवाह है, Let me just share वेणु जब बजती है ना तो उसका one feature of the flute. So the flute और उस पानी में कोई तिनका आ गया तो वो तिनके को अपनी अपने प्रवाह के साथ has a flow, as if a river is flowing and a water is flowing, then whatever
touches it, अपने और लेकर जाएगा, लेकिन it carries away that thing with itself. बांसुरी का But the जो flute doesn't has the similar बांसुरी का जो प्रवाह behavior or है, nature. उस प्रवाह The को flow of the होगा flute, तो वो उसे the, विपरीत दिशा में लेकर जाएगा। श्लोक के द्वारा so, आप but it will take you in the reverse direction. So I want to explain it through the medium of this verse in front of your screen. सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूल्येन कर्षति वेणु ध्वनि प्रवाहस्तु प्रतिकूल्येन कर्षति प्रतिकूल्येन कर्षति। नोट कर लीजिए, दुनिया में ये श्लोक कहीं नहीं मिलेगा। ये भागवत का नहीं है, भागवत में गोतता नहीं तमें आ બધું नहीं મળે। So this is not from the Bhagavatam, so don't try to find it here. सर्व प्रवाह मतलब जितने भी प्रकार के प्रवाह So है, in this world, all kind of flow और सर्वत्र जितने भी प्रवाह है, everywhere. તમે જઈને જુઓ, वो फॉल जहां जाता है उसमें तीन का We have Niagara Falls, yes, and whatever falls in this Niagara Falls, then it will take it along with it, whether it's a stone, a human, or a branch of a tree. So it will attract it towards itself and take it along with it. But the flow of the flute or the sound of the flute is what? Pratikul, that is, it takes it into the opposite direction. अपने से विरुद्ध में भेजती, इसका अर्थ क्या हुआ कि वेणु ध्वनि जो है, so the sound of the flute जहां से उद्गम हुई है वो वहां उसे फेंकती है, वहां छोड़ती है। so instead of taking it along with it, it send that person back. So let me give you an example. If you are standing on the bank of a river and you don't know how to swim and you by mistake fell into the river, then what will do? What will the water do? The water will वेणु ध्वनि कैसी है? वेणु ध्वनि make you flow with the flow of the water or the river. But the flute flow is opposite. It will take you where you have from where you have started. अपने उद्गम, अपने स्रोत, अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचाना, ये वेणु का काम है। And that is the purpose of the flute. इस संसार में भटक चुके हैं। And the conclusion is that we are all far away from our destination. But if we listen to the pastimes of the songs of the Krishna's flute, then it will leave us to or take us to our destination, back to Godhead. The flow of the material world is not like that. If someone संसार के सारे प्रवाह ऐसे हैं, falls in this material world, then he will remain entangled in this material world. But the flow of this flute will take us back to our destination. मेरे पास वो श्लोक नहीं है, केवल आप सुन सकते हैं। वेणु शब्द कहां से बना? So, from where did the word Venu originated? It's a Sanskrit word. वेणति, वेणति इति वेणु। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, मैं बताऊंगा जैसे जैसे याद आएंगे, लेकिन एक तत्कालीन याद आ गया। वेणति इति वेणु। So, Venu means Venati iti Venu. ऊपर की ओर बढ़ना। So, ये वेणु जो है Venati means वो कैसी
to rise above. So the flute is made with bamboo. And have you seen a bamboo tree? It is grown in the ground, but and it always rises high, and it always remains straight, and it always rises, and the thing that always rises up and takes others along with it is called Venu or the flute. So this mellow of the Venu or the flute, then it will take us forward or move us forward upwards. In this world, the influence of Maya is so strong that no matter how much we try to protect ourselves, we still get entangled. And it is very easy to get attached to the material opulence and sense gratification. And it is real uphill task to get rid of these carnal or desires of our senses. But has but Krishna has played this flute, and anyone who listens to this flute will forget this material world, and he establishes itself in his eternal form. And the example is in the verse that we shared. These gopis were working, and they have almost forgotten the Lord, as we get busy in our material life and forget Krishna. But as soon as these gopis heard the flute of the Lord, they remembered Krishna. Similarly, if we listen to the Venu Gita or the flutes, songs of the flute of Lord, we will get relieved of all these material entanglement, and it will create our attachment towards the Lord and free us from our material attachments and entanglements. So, an ordinary human being cannot achieve this, but it can be achieved easily by the songs of the flute of the Lord. So Krishna has one name, that is Klishta Karma. That is, the Lord has taken many forms to for the welfare of his devotees, but he is using his flute with, with filled with mellows instead of carrying any weapons. He, by playing his flute, is attracting living entities towards him. In Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami writes that there are three types of the flutes.
So the first एक is मुरली Venu, और second दूसरा is है Murli, वंशी। and the third is हमको तो Panchi. ये सब एक ही लगता है, बांसुरी कहो, वंशी बोलो, वेणु बोलो, Panchi, sorry. मुरली बोलो। So for लेकिन us, रूप गोस्वामी ने all थोड़ा सा appears same, सब्जेक्ट भक्ति but रसामृत सिंधु में सब बताया है। Rup Goswami has described बोले it तीन प्रकार की बांसुरी होती है, technically. एक होती है जिसको कहते हैं वेणु। So the वेणु की first is महिमा क्या है? Venu, and the glory ये of 8 Venu कोस is लंबी होती है, that it ज्यादा is, नहीं। वेणु जो है 12 its उंगलियां होती length है, is जिसमें 6 छिद्र like होते हैं, 12 6 होल। fingers, and इसे it has कहते हैं 6 वेणु। holes. That is दूसरी Venu. होती है मुरली। Second मुरली is 2 Murli, हाथ लंबी होती है, 2 हाथ 6 फीट। और and it is as long as 2 hands. इसमें मुख छिद्र छोड़कर 4 अन्य स्वर छिद्रों वाली ये मुरली होती है। And it इसका has नाम है 4 वंशी। holes apart from वंशी the 17 main hole, उंगली लंबी होती है, and the Vanshi और is इसमें 9 छिद्र 17 होते हैं। fingers long, and it has इस 9 दुनिया में holes in it. जितनी भी वस्तु है सब ब्रह्मा जी ने बनाई, और इस In दुनिया में this world, सारी everything वस्तुओं was का created ज्ञान by ब्रह्मा को है। Brahmaji, and he has the knowledge of कृष्ण जब everything. बांसुरी बजाते हैं तो But बांसुरी का ज्ञान the ब्रह्मा को flute है। that Krishna plays, ब्रह्मा सब not जानता even है। Brahma knows about तो it, भगवान ने क्या किया, although he knows अपने everything, हृदय में जो हार्ड डिस्क थी वहां कॉपी किया और ब्रह्मा के हृदय में पेस्ट कर दिया। मतलब भगवान में जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान ब्रह्मा को दे because दिया। he gave तो all the जितना knowledge जानते थे सब ब्रह्मा को ज्ञान हो to गया। Brahma. लेकिन एक चूक गए ब्रह्मा। क्या चूक गए? But only one thing बांसुरी बजाना was भूल गए। not हमारे पुराणों के told, अनुसार and ये that is about बांसुरी the जो है, flute. According to our बांसुरी scriptures, भगवान का अवतार है। flute is an incarnation of Lord Himself, बांसुरी एक according to the अवतार है। Puranas. जितना समय है उसमें मैं इतना बताऊं, बांसुरी एक अवतार किस प्रकार से हुआ बांसुरी का सुनिए। So let me share how एक बार it भगवान श्री came as an कृष्ण incarnation. गिरिराज गोवर्धन में विचरण कर रहे थे, So once upon a time, और विचरण करते Krishna करते was अचानक श्रीमती राधा roaming रानी की याद आ गई, in Vrindavan, और and कृष्ण he बिल्कुल मचल गए, विचलित हो गए। राधा remembered राधा। Sri Radharani and became distressed. शास्त्र में लिखा है He was agonized राधा for the reverie of पश्चिम Srimati Radharani. पश्चिम तश्च राधा राधादि सव्य मिह दक्षिणश्च राधा। राधा रानी का विरह हुआ, When राधा he felt the mellow of separation हाँ राधे with करते Srimati करते Radharani, राधामय हो गए, and उत्तर he दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर राधा ही राधा दिखाई became देने लगी, और भगवान श्री कृष्ण राधा की so much कल्पना करते engrossed in her reverie that और he राधा could रानी see की her कल्पना करते everywhere. करते करते कृष्ण की सारी चेष्टा शांत हो गई। समझते हैं आप? He was कृष्ण इतने repeatedly डूब गए calling राधा her के नाम name, में, कृष्ण का and पांव he was so दौड़ना submerged in बंद her कर दिया। name मान लो कभी that किसी his के आगे आ feet गया, were no longer कृष्ण working. का हाथ भी काम करना बंद कर दिया, His hands were not कृष्ण working, के as if नेत्र he has बंद हो got a गए, paralytic attack. कृष्ण के शरीर की His सारी eyes चेष्टा, सारी and his इंद्रियां बंद हो गई, all केवल एक ही senses इंद्रिया काम stopped कर रही है, राधा राधा working राधा except राधा his राधा tongue, राधा। which is constantly calling the name of Radharani. निरंतर कृष्ण के मुख से केवल राधा He's राधा राधा constantly chanting her name, और उसी समय वहां पर and at this वाणी की point, देवी, विद्या की वाणी की देवी the सरस्वती प्रकट हो गई, goddess of और speech, कृष्ण that के is Saraswati हृदय के Devi, भीतर सरस्वती जी manifested. देख रही है। And when she saw him, she is सरस्वती देवी ने amazed. क्या अर्थ समझा? बोले And राधा के विरह में she हे thought that श्यामसुंदर कृष्ण in पूरी दुनिया को भूल गए। separation of Radha, राधा के विरह में Shyamsundar पूरी has जगत को भूल forgotten गए, the whole सारी world, चेष्टा कृष्ण ने छोड़ दी, सबको and त्याग दिया, he लेकिन has दो लोगों left को नहीं त्यागा, everyone, एक but राधा he को has just left, और एक मुझको। not left two things. अब That is, सरस्वती को कैसे नहीं त्यागा? तो
Radha Rani and me, that is Saraswati, because all his senses were stopped, but speech was still there, and she is the goddess of speech. So he didn't left speech nor Radha. He thought that I am as much beloved of Krishna as much as Srimati Radharani. So sometimes it so happens when we visit to the temple, and if a senior devotee is standing in the temple, and if the Lord sees him, then the the sinner who is standing behind the devotee thinks that the Lord is showering his mercy on us. So this happened with Saraswati ji as well. So Saraswati ji stood there for quite long time, and when Krishna came back to his consciousness, he saw that Saraswati Devi was standing with folded hands, and Krishna asked, "Who are you?" She said that in your life you have only two things, one Radha and other me, because you left everything, all the senses, but you couldn't leave Radha and your speech. भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। So Krishna didn't like this. भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और उस सरस्वती देवी के सामने मौन हो गए। And he became mute in front of Saraswati ji. So now Krishna left even his speech and he became mute. And his speech also became inert. Then Saraswati ji realized that I have offended the Lord. And then she became inert. And she was reborn as a bamboo. And from that she became the flute of the Lord. So she thought that in this birth the Lord has discarded me, but in the second birth he should always accompany me. And she came in the second form as the flute by performing austerity, and she took the form of a flute. Then Krishna accepted her, and he gave her the benediction that he hasn't given anyone. He used to sleep with his flute. He became restless. If you serve the Lord, then you should always keep the flute with the Lord, because he cannot stay away from his flute. And this fortune was given to Saraswati Devi. And she came as the flute. Then the second is the incarnation of Shivji, Lord Shiva, as flute. So there are quite a few things. Today is the fifth day, and we haven't taken any question answer. So let me conclude the session here, because the dose has been little heavy. So, and it was technical, so just listen twice or thrice. So let me conclude the session after some information. If you have any question, then you can ask the same. I would like to thank you all for listening with so much patience and love. I especially want to thank
Suresh Parmar and Jayashri Parmar Mataji कथा का आयोजन किया। for organizing such a beautiful Bhagavatam Katha. Let's conclude the session with Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।